हेलो सैसी नारी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। और आज का एपिसोड भी काफी सैसी है, जहां पे 8 फैबुलस मॉमी शेयर करेंगी द वन सैसी थिंग दे डिड आफ्टर दे बिकेम अ मदर। सी, हमें से ज्यादातर विमेन का ये थॉट होता है कि एक बार मदरहुड हमारी लाइफ में आया तो सब कुछ रुक जाएगा। दिस इज अ लिमिटिंग बिलीफ जो शायद हमारी अपब्रिंगिंग, कंडीशनिंग और सोसाइटी से आया है। But for most of us in this generation, life takes a turn for the better. We evolve. हमारा thought process बदल जाता है, inhibitions हट जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, I'm sure. तो चलो फिर सुनते हैं कुछ मजेदार और कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Macleod. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं टू गेट क्लोजर टू द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव। वी टॉक अबाउट करियर, सेल्फ केयर, सोशल मीडिया टिप्स, पेरेंटिंग, रिलेशनशिप्स एंड सो मच मोर टू हेल्प यू थ्राइव। All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. तो इन स्टोरीज की शुरुआत करेंगे विद दीपा सदाशिवम। She came in our episode 28 और हम लोगों ने बात करी थी leaving our safe bank jobs to look for our callings. तो चलिए सुनते हैं दीपा ने क्या करी sassy thing after she became a mom. The thing that my child made me do was come out of my comfort zone and try and be an extrovert. Because I was an introvert. I missed out on big opportunities because of that. And I knew that I wanted to make my child free-spirited, at least be able to grab the opportunities that she wants. So earlier, when she was 6 months old itself, I used to take her out. I used to go to the parks, and I used to have a conversation with other parents over there, try and have a conversation with other children and parents over there, which I would never have imagined myself doing in normal times. नहीं यार, किड्स चेंज है, क्योंकि मेरे साथ क्या था, आई वाज मतलब मुझे लगता था यार हु एम आई, आई जस्ट डिडंट फील लाइक एनीबडी। किसी से बोलने में या अपने बारे में बात करने से आई यूज्ड टू शाय अवे, बट आफ्टर हैविंग विदाया मुझे लगने लगा कि आई कैन टॉक, आई शुड टॉक। और मतलब उसके साथ खेलते खेलते यू फील लाइक अ चाइल्ड, तो आपको लगता है कि हाँ आप ये कर सकते हो। yes. तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है, जरूरी है। I know. Yes, very true. And my child made me speak up actually. Okay, there is the attitude of adjusting in an Indian family setup. So when you have a child, there are a lot of advices that are given to you. And then it's your choice if you want to follow it or not. So I would tell my relatives or family members that no, I'm not going to follow what you tell. I'm going to follow what I want to follow, what I think is right for my child. So she made me speak up for myself and for her, and say no, and have the ability to say no. So Deepa learned to take a stand. So powerful. और अब जानते हैं कि सुपर स्वीट एलिना ने क्या किया sassy after the birth of her daughter. एलिना ने एपिसोड 32 में किड्स न्यूट्रिशन पे काफी अमेजिंग इनसाइट शेयर की थी। जानते हैं उनकी स्टोरी। Honestly, I believe I'm living my childhood again. So we jump, we do crazy stuff, we sort of, become like monkeys together. So I don't know if that qualifies, but yeah, that's what we do, and it's crazy. Like, she puts random things on my face. She comes and, makes me eat her toys. And we slide down from the sofa onto the floor using the benches that we have. And also, we do crazy stuff. I don't know if it is sassy, but it is certainly crazy. Yes, and it is amazing. It is amazing because हमें लगता है ये वाली साइड जो थी हमारी living my childhood again, yeah. हम लोग नहीं करते हैं नॉर्मल लाइफ में ऐसा। Even I am living my childhood again. मतलब जो क्रेजी चीजें हम लोग करते हैं बच्चों के साथ, या फिर इतने सारे टॉयज, बुक्स जो मैं खरीदती हूँ हिदाया के नाम पे, कभी कभी they are for me. Okay, that's an honest confession. I just love doing this. Okay, और अब नेक्स्ट स्टोरी है ईशा लांबा की. She is a fitness trainer. She gave some awesome fitness tips in our episode 34.
और देखते हैं कि उन्होंने मॉमीहुड के बाद क्या सैसी चीजें डिस्कवर की अपने बारे में. I used to think that I can never be a tough girl. I used to think I'll always be like a sobby one, जो पूरा टाइम रोती पिटती रहेगी किससे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा. And now I think that there is nothing that you can't achieve. Like I personally feel that there's nothing that I can't achieve if I don't work for it. And I would think कि that is something I never thought I would ever be able to do. Like a strong head. I thought कि मैं हमेशा से very emotional, very touchy और वो रोती पिटती लड़की रहूंगी जो मैं बचपन में थी. But I would have never thought कि I would come out to be a stronger person. Wow, I think kids हम लोग का जो mental makeup होता है वो कहीं ना कहीं change कर देते हैं. हाँ, वो तो है. टफ गर्ल बनना इज ऑल्सो अ जर्नी. इवन मैं भी काफी रोतलू टाइप्स थी पहले. आई एम गेटिंग बेटर एट कंट्रोलिंग माई इमोशंस, क्योंकि मुझे लगता है कि इफ आई डोंट cry at the drop of a hat, तो maybe धाया भी she will not become a crier. It will help her. और अब जानते हैं नेक्स्ट स्टोरी सेलिब्रिटी मॉम छवि मित्तल की, कि उन्होंने ऐसा क्या किया मदर बनने के बाद कि उनके करियर की डायरेक्शन ही चेंज हो गई. Yes, and by the way, she was a guest on episode 33. Yes, absolutely. When I became a mother, the only thing that I knew to do was act. And I thought that I can only be an actor. And I felt like a slave to somebody who's going to offer me work. And I just kept sitting and waiting for that golden opportunity to happen. A lot of opportunities came, but nothing that I was happy doing. And I decided that I'm going to do something which I will do on my own, and I'm going to do it well and like really good. So today I don't just act. I do so many things. I know how to edit. I know how to write. I know corporate things. I know so many things which I didn't study in school, So many things I've learned on my own. I've studied the entire way the social media works, social media marketing, posts to make creatives. All these things I've learned on my own with experience. And I feel that has made me such a, a better person. So yeah, that happened only after I became a mother, and I realized that what I was doing before I was a mother is not something that is going to cut it for me now. So I have to do something more. Yes. मुझे भी लगता है कि ऐसी रियलाइजेशन बहुत सारी मदर्स को होती है आफ्टर मदरहुड. पहले उनको लगता है कि दिस मैटर्स, बट व्हेन वी बिकम मदर्स हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं. और शायद ये भी होता है कि वी डोंट वांट टू फील लिमिटेड by just being a mom. So I think I'd like to correct you there. It's not just being a mom, because you can never feel limited just being a mom. I feel that once you're a mom, you realize your own capabilities and the kind of things that you can multitask with. That abhi tak aap sab apne khud ke liye kar rahe the, but now you're taking care of a baby, you're breastfeeding, you're cleaning nappies and diapers, you're still continuing to do all the things that you were doing before the baby came. Now you're doing all these things also. You're also not sleeping in the night. You're also cooking for the baby. You're also taking care of the baby's nutrition. These are things which are come with huge responsibilities. You cannot mess up a baby's food. You cannot mess up the diet. You cannot give the baby something wrong. It might react, And what to do when the baby falls sick? You are the person who's so hands-on, and you're absolutely in control of the situation. These things make you evolve as a person. You're not just a girl anymore. You're a mother. It makes you evolve on such larger scale, and some mothers don't even realize what they do. Kitni badi cheez hoti hai, to be a mother and to take care of a human being and be responsible for everything that the child is learning. I think it's a huge, huge task, and if a person can do that, then I think there's no limit. A person can do anything. Yes, I love how you think, because जब मैं मॉम बनी ना, because I was never ready for motherhood. फिर भी मैंने सोचा चलो let's give it a chance. When I became a mom, even though I was doing a lot, but मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि I have become restricted. That's why the question I asked you कि just a mom. तो ये question बहुत सारे लोगों के साथ आता है. जैसे मेरे पास आया कि नहीं ये नहीं करना है. I was doing इतना सारी चीजें और अब मैं घर पे रह गई हूँ, बच्ची के साथ रह गई हूँ. तो but the way you put it, I think it's amazing, and every mom should think like this. So Chavi explored herself और उन्होंने कुछ नया ट्राई किया and she became successful at it. How amazing is that? और अब जानते हैं हमारी लेटेस्ट गेस्ट की स्टोरी, जो हमारे लास्ट एपिसोड में आई थी, श्वेता, जिन्होंने फोटोग्राफी टिप शेयर की थी. आइए जानते हैं कि उनके बिहेवियर में क्या पॉजिटिव चेंज आया पोस्ट मॉमीहुड. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं सोशल मीडिया पे, मतलब मैं जब इंस्टाग्राम पे तो मैं 2010 से थी,
शिवेन के होने के बाद मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई व्हेन आई वाज अ कॉन्फिडेंट बट नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल एंड आई थिंक वो शिवेन के होने के बाद से मुझ में एक अलग सा ही वो आ गया कॉन्फिडेंस एंड लाइक नाउ आई एम अ मॉम एंड आई कैन टॉक एंड एक अलग ही दैट एक एनर्जी आ गई. तो मुझे पहले बड़ी शर्म आती थी कि यार सब लोग देख लेंगे, डाल देंगे सोशल मीडिया पे अगर, तो है ना, वो बड़ा एक झिझक थी मुझे. पर आई थिंक अब तो मैं सब कुछ डालती हूँ. बहुत लोगों को लगता है पता नहीं क्यों डाल रही है, बट अब तो मैं बिल्कुल बिंदास होके आई पुट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, आई मीन व्हाटसोएवर इट इज, आई एम सो फियरलेस नाउ. आई थिंक ये मेरे को दिस मेड मी एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. सो आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया. बिकॉज बच्चे होने के बाद वैसे ही बोलते हैं ना, आपकी सारी inhibitions, you lose your inhibitions when you have a child. So I think वो हो गया and I'm like totally fearless and shameless and I'm very confident. So I can speak whatever it is in my heart and very strongly I can put my words. So I think that's the most sassiest thing he has done to me. Okay, और पता है मेरा आंसर भी एग्जैक्ट यही होता है जब भी कोई मुझसे पूछता है ना, फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस. बिल्कुल, मतलब बहुत चेंज आ जाता है. मैं भी बिल्कुल ऐसी थी. मैं किसी भी रूम में अभी भी आई विल नॉट से आई एम आउटगोइंग, लेकिन मैं पहले किसी रूम में जाती थी ना, तो आई यूज्ड टू फील वेरी ऑकवर्ड कि कैसे बात करूंगी या फिर ये करूंगी. सही में मैं तो मिलती ही नहीं थी. मुझे कोई कहता था ना इनसे मिलना है, मैंने कहा मैं उसको जानती नहीं. तो मैं Exactly. जब तक तुम मिलोगे नहीं जानेंगे. आई कांट टॉक. मैंने कहा मैं बात क्या करूंगी, मुझे नहीं, आई कैन नॉट. मैंने से बात ही नहीं होती थी. और मुझे अभी भी ना बहुत लोगों से मुझे, मतलब अब तो खैर मैं ऐसा नहीं है, पर पहले तो मैं बात ही नहीं कर पाती थी. तो मैं जाती ही नहीं थी आधी जगहों पे बिकॉज आई वाज लाइक आई कांट टॉक. What do I talk? I don't know the person. Because there are people like my husband can talk to anybody on this planet. He can talk to anybody and everybody. So बिल्कुल सही बात है ये आपने जो कहा. I can totally relate to this. Wow, confidence. Even I got a lot of it post becoming a mother. और ऐसी ही कुछ सिमिलर स्टोरी है हमारी नेक्स्ट मॉम, जिनका नाम है मोनिका, एंड शी वॉज ऑन लिटिल फिक्सेस का एपिसोड 35, जहाँ पे उन्होंने अपनी अमेजिंग स्टोरी शेयर करी थी ऑफ टर्निंग हर हॉबी इनटू अपॉर्चुनिटी. जानते हैं उनकी सैसी स्टोरी. मतलब पहले मुझे ना, मैं बर्थडे पार्टीज टाइप होता था ना, मैं थोड़ा अवॉइड करती थी जाना. मुझे वो शर्म आती. वो एक होता है ना कि जब आप एक रूम में बहुत लोग बैठे हैं और आप एंटर करते हो, तो वो मैं घबरा जाती थी. वो घबराहट सडनली राइल के होने के बाद ना, वो घबराहट कहीं गायब हो गई. मतलब इट्स नॉट देयर एट ऑल. अभी मैं आराम से आई कैन वॉक इन कि किसी रूम में 10 लोग बैठे हैं तो मैं आराम से बीच में जा सकती हूँ. तो मुझे डर नहीं लगता है, मुझे घबराहट नहीं होती है. एक ये चीज है जो हुई है. यार कॉन्फिडेंस तो आता है सही में यार बच्चों के बाद. आई थिंक मेरा भी कॉन्फिडेंस हिदाया के बाद बहुत बढ़ गया है. पहले आई यूज्ड टू बी लाइक दिस. अभी भी आई एम एन ऑकवर्ड पर्सन, बट इट इज मच बेटर पहले से. हाँ, बेटर है. पहले से तो काफी बेटर है. मुझे लगता है कि ये बच्चे होने के बाद आप थोड़े चेंज भी हो जाते हो एज अ पर्सन ऑल्सो. हाँ, क्योंकि आप चाहते हो ना कि बच्चा वैसे ही बने, तो आप खुद को वैसे ढालने की कोशिश करते हो. आप अपने आप को वैसे कर लेते हो. एग्जैक्टली. Walking with confidence in a room feels so powerful. Yes, I can do it. ऐसी वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है. और अब अपनी स्टोरी शेयर करने वाली है रुचि सचदेव, जो आई थी एपिसोड 35 में. और उनकी स्टोरी अभी तक की सारी स्टोरी से काफी डिफरेंट है. जानते हैं कैसे. Oh, it has to be me spending time with my kid. I always thought कि me being homebound and being stuck with a kid, that is not me at all. मैं तो मतलब I'm gonna be free all my life. Can't be like, stopped by, my wings can't be clipped by a child. I mean, I'm a different person altogether. I'm a different person altogether with my child. I mean, she is my number one priority right now. No matter what, she is my number one, my main thing ever. Every decision that I take is thought from the perspective about her being the end beneficiary. See how sassy the kids make us. मतलब मुझे भी पहले बहुत सारी चीजें लगती थी, ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी. और जब my daughter was born, उसके बाद मुझे लगा now I am tied to her. But slowly as I kept going, I realized कि नहीं, I am changing for better. और बहुत सारी अच्छी चीजें हुई फिर उसके बाद. No, I think it's only because I really had no support when she was born. Yes. My husband had to go back to work after 10 days of the paternal leave. And उसमें से भी 3 दिन were in hospital only. So basically, effectively, after 7 days in my C-sec, I was taking care of my child alone. So I think that teaches you a lot. So I think that is why I learned a lot about parenting. I mean, by my own self. So maybe motherhood के बाद हमें से बहुत सारे लोग अपने घरों में बंद जाते हैं, बट उससे भी बहुत प्यारी चीजें बाहर आ सकती हैं, जैसा कि हमें पता चला रुचि की स्टोरी सुनने के बाद.
और अब जानते हैं हमारी डीवा मॉमी सरू की स्टोरी। सरू की स्टोरी है ऑफ कमिंग आउट ऑफ हर लिमिटिंग बिलीव्स, जैसे कि हमारी अभी तक सारी मॉमीज की थी। तो सुनते हैं उन्होंने आखिर अपने बारे में क्या नया डिस्कवर किया। और हाँ, शी शेयर्ड हर टिप्स ऑफ ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया इन एपिसोड 22. So maybe you would want to listen to that as well. Sassiest thing. I mean, there are many things actually I never thought. To be very honest, Rudy से पहले मुझे लगता ही नहीं था कि I could become like a good mother. You know, back then यही thought होता था कि oh my god. मतलब how will I handle? मतलब मैं I was very lazy to be very honest. And अगर मैं सोती थी तो मुझे मालूम ही नहीं होता था कि मतलब बाहर कोई जा रहा है। I was like घोड़े बेच के सोती थी। And मुझे ऐसा लगता था कि यार how will I, what if I forget my baby somewhere? मेरे अंदर ही nightmares आते थे कि मैं इतनी lost हूँ। I'm so lost minded that what if this happens, what if that happens and this goes wrong? And that's why I used to read a lot. You know, that I wanted to be prepared for it because somehow the society also had made me somewhere think that I am not really, you know, suitable to be a mom the way I was, the kind of my lifestyle was. Yeah, so but after he happened, like everything changed. I was like a different person altogether, and it happened naturally, not that I was deliberately trying to be you know, a good mother or something. But I never really knew that, you know, I could actually have fun with my child. I could actually enjoy and live my life with him. Being a child, मैं parks में उसके साथ भागती हूँ, hide and seek खेलती हूँ, and all these things I do with him. I never really thought I would do, but I think it just comes naturally. Yes, and we don't even realize. लोगों को लगता है यार ये इतनी मॉडर्न है, ये ऐसे रहती है, ऐसे करती है, तो ये कैसे कर पाएगी बच्चे को, कैसे कर पाएगी? एग्जैक्टली है ना, हमारे वो प्रीकंसीव नोशंस होते हैं सबके लिए, हमारे भी होंगे। लाइक मैं भी अपनी सिस्टर को कभी कभी बोलती हूँ कि बहुत गुस्से वाली मॉम निकलेगी। हाँ, obviously we all have some notions. Yeah, but then motherhood, it changes you like anything. So थी ना अमेजिंग स्टोरीज इन सारी मॉमीज की। आई लुक अप टू ऑल ऑफ देम। आप रिलेट कर पाए क्या इन सारी स्टोरीज से, या मे बी किसी एक की स्टोरी से? मेरे लिए भी कॉन्फिडेंस वाज द बिगेस्ट चेंज पोस्ट मदरहुड, लाइक मोस्ट ऑफ दीज मॉम्स। यस, आई एम स्टिल थोड़ा शाय, थोड़ा इंट्रोवर्ट, काफी ऑकवर्ड, बट अगर आप मुझसे 4 साल पहले मिलते तो आज वाली मैत्री को शायद नहीं पहचान पाते। आई एम एंजॉयिंग द चेंज सो मच। आई होप कि इस एपिसोड ने आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचने के लिए पुश किया, अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आने के लिए पुश किया। हर एपिसोड से मेरी यही कोशिश रहती है। इन सभी लवली लेडीज के सोशल मीडिया के लिंक्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगे, और शो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे नेक्स्ट एपिसोड भी काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आई विल इंटरव्यू नन अदर देन माई 3-year-old डीवा। वो जरूरत से थोड़ी ज्यादा ही सैसी है, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय लिसनिंग टू हर। आई एम येट टू रिकॉर्ड दैट एपिसोड, तो देखते हैं क्या बाहर आता है। तब तक सब्सक्राइब टू अस ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लिटिल फिक्सेस सुनते हैं। कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम @littleFixesPodcast। नेक्स्ट पिंक वेडनेसडे का वेट करो और सदा सैसी रहो। बाय।